લાઇટિંગ માં કોઈ પ્રોબ્લેમ ના રહે. Ready? Okay. Good evening. Southern Gujarat Chamber of Commerce Industries માં આજના વેબિનારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ તો our president Ashish sir, Kunal bhai, our today speaker Tahir bhai Badshah from Invesco Mutual Fund, Prabhat Sharma, Vinayak Bhatt, our advisor Ketan bhai and Nikhil bhai Madrasi, and all other Surat investor and friend. આજના આ સેમિનારમાં જે મેઇન ટોપિક છે એ આજે ટાયરભાઈને આપણે સાંભળશું. બટ ચેમ્બર અવારનવાર આવા વેબિનાર કરતા રહે છે કે જેથી ઇન્વેસ્ટરોને માર્કેટ વિશે જ્ઞાન મળતું રહે ને એના માટે જ આવા વેબિનારો કરતા આવેલા છે. ને અમારા પ્રેસિડેન્ટનું ને એમનું ટીમનું કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ વેબિનાર એવા ચાલુ રાખો કે જેથી ઇન્વેસ્ટરો અવેર રહે ને સારી રકમ પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે. તો આજના સેમિનારમાં હું અમારા પ્રેસિડેન્ટ આશીષભાઈ ગુજરાતી સાહેબને વિનંતી કરું છું કે વેલકમ કરે. Thank you, Yakub bhai. Today's webinar topic is equity market, war and beyond. So we have a very learned speaker, Tahir bhai Badshah, our advisor Ketan bhai Dalal, Yakub bhai is the chairman of the capital and commodity market, Kunal bhai and Nikhil bhai Madrasi, our group chairman. The today's topic is very relevant, and I think the fundamentals of our economy of the country is very strong. जो हमने इवन द कोविड पीरियड के टाइम पे भी एक्सपीरियंस किया कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी तरह से हैंडल की है, एंड वी वर लीस्ट इफेक्टेड इन द थर्ड वेव. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वॉर, जैसे यूएन में जब वोटिंग हुआ तब यूएई, चाइना और इंडिया दे रिमेन न्यूट्रल because China and India being the largest manufacturing hub in the world and UAE being the largest trading hub in the world. So they had been neutral, and world has also acknowledged our stand. And as it is, our government is handling this situation also very well. हमने देखा कि भाई हमारी जो सप्लाई चेन है क्रूड ऑयल की वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई. इनफैक्ट हमें क्रूड ऑयल डिस्काउंट रेट पे मिलने लगा है रशिया से. और हमारा जो सूरत का जो बिजनेस है डायमंड का, जो वी आर डिपेंडेंट ऑन द रफ फ्रॉम रशिया, so that is also not affected. So I believe that our economic fundamentals are strong and will remain strong. और further तो आपको जो भी guidance है वो ताहिर भाई देंगे. So thank you very much, and I welcome all the speakers, I welcome all the participants, and I welcome all my managing committee members also. Thank you. Thank you, Ashish sir. આજના આપણા સ્પીકર ના ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા માટે અમારા કમિટીના એડવાઇઝર હું કેતનભાઈ દલાલને રિક્વેસ્ટ કરું છું. કેતનભાઈ. Thank you, Ayub bhai. When the chips are down, and especially when the global military conflicts are going on, understanding the behavior of capital markets becomes imminent, as it affects one and all. It affects the global economy as a whole,
and every country has a pie of it. Today, we are fortunate to have one of the wizards of the Wall Street. Having 27 years of experience and at present playing an responsible role at Invesco Mutual Fund as a Chief Investment Officer and managing more than 27,000 crores in equity. Prior to Invesco, he was the head of equity at Motilal Oswal Asset Management Company. He also worked for ICICI Prudential, Kotak Mahindra, and Alliance Capital as an advisor for the equity management. Academically, he is a bachelor in electronic engineering and master's in management with specialization in finance. Friends, it is very well said that growth is never a result of mere chance. It is the result of various forces working together. Combination of engineering and finance is a preferred choice in capital market. He understood the value migration at Hero Honda from scooters to motorcycle very well and became the early trend identifier when the stock was at 500 crore market cap. And today it is above 66,000 market cap. The public issue of Maruti Suzuki, the juggernaut in 2003, was on the verge of fall off. It was he who led and pushed the issue from 5,000 crore market cap. At present, the stock is at 1,75,000 crore market cap. Badshah is his last name, which means kings, the emperor. And as the emperor is known for having many eyes and ears for the betterment of his people, in the same way, he also does the same for his investors. So friends, let me assure you that it will be a very interesting session and hope would be helpful to one and all. With this, I conclude and request our chairman, Mr. Ayub Bhai, to take on from here. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ketan bhai. આજનો જે ટોપિક છે ઇક્વિટી માર્કેટ વોર એન્ડ બિયોન્ડ. આ વિષય ઘણો મહત્વનો છે અને રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની માર્કેટ પર શું અસર થશે અને રોકાણકારો માટે શું માર્કેટમાં જોવા મળશે, ખાસ કરીને ઘટાડામાં રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ તે અમુક રોકાણકારોને સમજાતું નથી. તો એ આપણને તાહિરભાઈ બહુ સારું સમજાવશે. ગ્લોબલાઇઝેશનના યુગમાં યુદ્ધ કોઈ પણ દેશો વચ્ચે થાય એની અસર વિશ્વના બધા જ દેશોના અર્થતંત્ર પર જોવા મળે છે. રશિયા દ્વારા યુક્રેન પર હુમલાથી અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા લગાવવામાં આવેલ સેન્કશનથી ક્રૂડ ઓઇલ જેવી કોમોડિટીમાં જંગી ઉછાળો આપણને જોવા મળ્યો અને તેથી આવનારા સમય દરમિયાન ભારતના ફોરેક્સ રિઝર્વ પર માઠી અસર પણ પડશે અને ફુગાવો પણ વધતો જોવા મળી શકે છે. યુક્રેનનું સનફ્લાવર ઓઇલ, ઘઉં એ એક્સપોર્ટ બહુ મોટી માત્રામાં ત્યાંથી થાય છે. યુદ્ધથી આ એક્સપોર્ટમાં ઘટાડો જોવા મળશે. ખાદ કોમોડિટીમાં પણ ભાવ વધારો જોવા મળશે. કેપિટલ માર્કેટની વાત કરીએ તો માર્કેટ 18,600 થી 15,600 સુધીનો કડાકો જોવા મળ્યો. એફઆઈઆઈની સતત વેચવાલીથી રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. કડાકા દરમિયાન ભારે વોલેટિલિટી જોવા મળી અને નિફ્ટીમાં ઇન્ટ્રાડે 700 થી 900 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ જોવા મળી. એ આઈ થિંક કે માર્કેટમાં કોઈ વખત જોવા નહીં મળી હતી. એટલે માર્કેટમાં કંઈક હમણે જ્યારે આપણે ચાલુ કરવા પહેલા તાહિરભાઈ સાથે વાત થતી હતી તો એમણે કહ્યું કે કંઈ નવું જ જોવા મળે છે. તો બધું નવું જ મતલબ માર્કેટના અંદર સેન્ટિમેન્ટ આપણને ડે ટુ ડે જોવા મળે છે. એટલે આજના વખતે આપણા તાહિરભાઈ બાદશાહ દ્વારા આપણે જાણીશું કે એક સામાન્ય રોકાણકાર આટલી મોટી વોલેટિલિટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું જોઈએ તેમજ
શું આ યુદ્ધથી જોવા મળેલો ઘટાડો રોકાણકારો માટે નવું રોકાણ કરવાની એક તક છે કે પછી યુદ્ધના વિપરીત પરિણામો આવવાની વાર છે અને કેપિટલ માર્કેટમાં હજુ પણ ભારે વોલેટિલિટી જોવા મળશે? એ આપણે આજના વક્તા તાહિરભાઈ બાદશાહથી જાણીશું ને એ આપને સારી રકમ સમજાવી શકશે એવી આશા રાખીએ છીએ. તાહિરભાઈ, વધારે ટાઈમ નહીં લેતા આપ અમને સમજાવો કે ભાઈ આ વોરના ટાઈમ પર માર્કેટમાં કઈ રકમ ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય કે પછી કઈ એની તક આપણે ઉઠાવી શકીએ. તાહિરભાઈ. So, good afternoon, all the respected members of SGCCI. Ashish Bhai, good afternoon, Ayub Bhai. Thank you for the introduction. Ketan Bhai Dalal, thank you very much for the very liberal introduction, I should say, and you've almost made me feel embarrassed. but it's nice to hear from you nonetheless. And Krunal Bhai, thank you all of you for inviting me and having me on your on this esteemed webinar. ઘણા વખતથી સુરત આવું થયું નથી, so it is an unfortunate thing. In the last maybe 3 years, 2-3 years, 2019 obviously I had come. I think I came in the early part of 2020, also January 2020 or something. I think I came. So that was my last visit. But it is always nice to be in the midst of Surtis, and I have a long association with this place, even as a professional as well as from my own personal standpoint. So it's always good to be within Gujaratis and more particularly within in the midst of Surtis. So thank you for inviting me. Well, the topic that aaj apna samne chhe is something which is different, and at the same time it is, am sochwa jaye to it is not something which is very different either, because in terms of events keep happening in the market almost every now and then. Ek event જાય છે તો બીજો તૈયાર જ હોય છે, ઊભો રહે છે આપણા સામે. So we are never short of events in the markets, and especially for investors. And dealing with events and on a short time frame is always a challenge, and it is એક રીતે આપણું બધાનું એક જોબ બી છે. But many a times આપણે જોઈએ છે કે on a more longer scale જોવા જઈએ તો પછી after some time these events beyond a point don't matter as much. I mean, I think what finally equity markets ના અંદર હંમેશા જોવા મળ્યું છે, અને what has always ruled over and above everything is the economy, the performance of the economy, and એના અંદર performance of the companies, અને કંપનીઝનું ગ્રોથ અને કંપનીઝનું ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ. અને એ જ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રુથ સચ જેવી આપણે કહી દઈએ, that is what it is. And the performance of those companies and the performance of the markets are a function of the performance of those companies. So at one level events come and go, but corporates, they continue. They adapt themselves also, and not just corporates alone. अपने individuals भी घणी अलग अलग events आवे छे. हमने ગયા 2-3 વર્ષના અંદર તો આપણે ઘણી બધી events જોઈ લીધી. I think war and beyond as a topic is appropriate, not just in the context of the current Russia-Ukraine war, but we are dealing with war on a daily basis in the markets. It's a different war every day, but every day is a war. Last 2 years we've been dealing with this war on COVID, and now it is a physical war. In our vache there are also other wars which are going on, many of us don't even know, and perhaps it's nice that we don't know, because they are in the background and they are happening, but we are not even aware. We don't know as much of it simply because we feel that they don't influence the markets, and
એનો ખુલાસો નથી થતો આપણા સામને, but even they are wars which are being you know which are happening on a daily basis, which are being fought on a daily basis. USSR Russia Ukraine no war thava pehla bhi there are people in the last year who have called out the possibility of World War III. And experts from several areas of defense, some noted people who work in foreign affairs, maybe even in the White House, aides to the White House, ex-aides to the White House, different people in this area have talked about the possibility or already the commencement of World War III in a different format too, which is being fought not with people or armies or boots on the ground, but they are being fought in space. They are being fought in the internet world. They are being fought in the technology domain. And આગળ જતા એમ હજી બી possible છે. હવે આ તો still we have we've seen some confrontation and a conflict on the ground in the form of armies between in the Russia-Ukraine war. But otherwise there are plenty of confrontations which are going around in the world which we are not even aware of. In space there is a lot happening between US, China, Russia, many players who are very, very advanced in the area of space and satellites. They are fighting a war about dominance in space and having a control over certain aspects out there. And they've seen on defense systems, missile systems, warfare systems in different parts of the world. So there are conflicts of different kinds which are happening even as we speak. This conflict in Russia and Ukraine, between Russia and Ukraine, is something which has caught our attention, and more importantly because of two things. One is the shorter term outcome or the shorter term consequence commodity prices now par je main asar je che, and starting everything from natural gas, oil prices, coal, and even hard commodities like steel, aluminum, and soft commodities also je apne ખાવા પીવાની બધી વસ્તુઓ છે, whether it is wheat, barley, sugar, milk, એના ઉપર બી મતલબ આનો અસર as we all know has happened. That is why it has come to our attention so much. But આમ જોવા જઈએ તો there are other kinds of wars which are already physical wars also which are happening in other parts of the world, Middle East, Latin America, good parts. Wars have been happening now for many years, even decades. પણ એનો અસર આપણે એકલો વધારે નહીં માલુમ પડતો કેમકે એ લોકોનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ is relatively less. But Russia as an economy is an important economy, and even though it is smaller now compared to what it used to be at one point in time, but એનું control હજી બી છે over few of the important parts of the energy value chain. અને એનર્જીનો જે આ સવાલ આવે છે તો it starts hurting every country કેમકે oil is something which is a global commodity and is used by every country around the world. And usage we know is the most important for running economies around the world. So the thing becomes a lot more important. But I think that some of this jo humne apne commodity prices nu je ek outcome joyu because of this war is not something that is only because of this war and this conflict which has happened over the last 3 or 4 weeks. The war has only been a trigger to a
a problem which had been building over the last 5, 6, 7 years already, especially in all these slightly polluting commodities, જે આપણે કહે છે, whether it is oil, natural gas, coal, એ બધી જે polluting commodities જેમાં environment નું concern વધારે આવે છે, એનું a problem we have been watching already build up for the last 6, 7 years, especially કેમકે around the world there has been this whole movement towards reducing carbon emission, improving the quality of the air around us, protecting the environment. And as a result of એ જે મુહિમ ચાલ્યું છે ગયા 5, 7, 10 વર્ષથી, યુરોપમાં તો કરીબ 20 વર્ષથી એ લોકોનો એ મુવમેન્ટ ચાલુ છે, અને એના કારણ we have come to a situation જ્યાં investments in all these traditional fuels, fossil fuel areas had almost come to a stop, and because of which incremental supply જે આપણે કહીએ that has not been coming. નવી જે ઓઇલની વેલ્સો જે ડ્રિલ થતી હતી પહેલા, જે ઇન્ટેન્સિટી જે પહેલા ડ્રિલ થતી હતી હવે નથી થતી, થાય છે, but not at the pace at which it was happening earlier. And cumulative impact over the last 5, 7 years is that there was already a shortfall which was there. And when some event like this happens, જેનાથી એકદમ dislocation બધું થઈ જાય છે, that is the time when the importance of these commodities comes into play. These commodities have a very small margin of demand supply balance. હવે આપણે ઓઇલમાં જોઈ લઈએ તો વર્લ્ડનું ઓઇલ કન્ઝમ્પશન આપણે જેમ ખબર છે કે on a daily basis the world consumes approximately 120 million barrels of oils per day. અને એમાં 120 ના અંદર જે તમારું ડિમાન્ડ છે એના સામે સપ્લાય તમારું રહે છે 121, 122 या 118, 119 એમ ચાલે છે. તો પ્લસ માઇનસ 2 મિલિયન 3 મિલિયન બેરલ્સ નું એક યા તો સરપ્લસ હોય છે યા તો ડેફિસિટ હોય છે, ને એકલું that causes the movement in the prices of oil on a daily basis. પણ આમ જ્યારે આ કોન્ફ્લિક્ટ સિચ્યુએશન આવે છે કે મિડલ ઇસ્ટના અંદર પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે હમણાં જે આપણે વોર જોઈએ છે એનો અસર આવ્યો, તો suddenly 5 million barrels of oil production goes out of the system, या ऊपर नीचे थी જાય. Now on 120 million barrels 5 million નું ઉપર નીચે થવામાં prices of that commodity move up by 30, 40, 50% ઉપર નીચે both ways. હવે ગયા આપણે almost 18 months ago આપણે જોયું કે oil નો futures price negative થઈ ગયો because of COVID, અને contract price $30 બી થઈ ગયો, 30-20 બી થઈ ગયો હશે. હવે 18 મહિનાના અંદર આપણે જોઈએ છે કે it went up to 130, 140, હવે હમણાં 110 નો ભાવ. So the big swing in 18 months, but on both sides there was excess. One excess on the other side was कि भाई everything will be over, demand नहीं रही અને अपने भी नहीं रही है, and no oil will be required and nothing will be required. And that was also not a reality. And on the other side, what we have seen is also, what we are seeing right now is also not a reality. But આ બધાના lasting impact in other ways will maybe continue. અને એનો જે lasting impact છે આપણે maybe will not be visible in the next 1 year or in the next 18 months, but maybe over a period of time will be visible to us in the form of two things. Either there will be continuing shortages જે ઘડી अपने सामने आवा करसे and we will have to deal with it, या तो अपने we will see good supply no response, in the sense કે ઘણી એવી commodities માં શું થાય છે કે beyond a point એક price level આવે છે તો everybody gets excited to make new investments, અને automatically એક જે આપણે કહે supply response that comes from the point of view of the producer. So producer will start putting up a new steel plant, or will start putting a new factory to produce, or maybe will start drilling more wells. જે હમણાં એકલા વર્ષથી નહોતું થતું, that will come with even bigger intensity, because they are making so much of money, they don't have a choice but to deploy that back into
the current business. તો એક supply side response આવે છે, which is an automatic balancing mechanism to bring down that commodity price. And if that doesn't happen, તો પછી prices એક એવી level પર જ્યાં પહોંચી જાય કે it starts to hurt demand only. At a certain price or beyond a certain price, people don't want to consume. I don't want to buy petrol and diesel at 125 rupees to a liter. Or maybe I will start driving less. Or I will go towards electric. या मैं हूँ के करीस. तो automatically જેને કહીએ છે કે demand destruction. तो demand destruction भी कोईना हितમાં નથી. Because ultimately economies want to grow. Governments want to grow. Governments want to collect more taxes over time and invest in the social requirements of the economy, social requirements of the country, and other requirements also. So it is not in anybody's interest that commodity prices continue in such a manner that it will start hurting growth, or it will lead to destruction of demand. So even अपने जो commodity prices નો अपने जो flare up જોયું છે, પણ મારા હિસાબે I think જે રીતે central banks around the world અને જે રીતે monetary authorities around the world are moving, even before conflict, commodity prices had already gone up even before conflict. તો એક રીતે એ તો already થઈ જ ગયું હતું. એમના કોન્ફ્લિક્ટના હિસાબે હજી વધારે એના ઉપર પ્રેશર આવ્યું. હવે all the monetary authorities, central banks around the world, એ લોકોનું એક જ કામ છે કે હવે આપણે આગળ જઈને monetary support જે હમણાં એકલા 2-3 વર્ષથી આપણે બહુ સ્ટ્રોંગ રીતે આપતા હતા. I think પાર્ટિસિપેન્ટની થોડીક રિક્વેસ્ટ છે કે હિન્દી ઇંગ્લિશ મિક્સ બોલજો તો. ઓકે, ગુજરાતી તો મેં બોલી જ રહ્યો છું, થોડું હિન્દી બી મિક્સ કરતો જાઉં. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ, સોરી. નો પ્રોબ્લેમ. મેં જોયો મેસેजेस જોયા થોડા ના. રાઈટ, લેટ મી ટ્રાય. ઓકે. ટન લેંગ્વેજ નું એક સાથે મિશ્રણ કરવું જરા થોડું મુશ્કેલ છે, લેकिन मैं ट्राई करूंगा. तो जो मैं कह रहा हूँ कि कमोडिटी प्राइसेस पहले से ही ऊपर जा रहे थे, लेकिन अभी जो कोविड के कारण और अपना जो ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण और भी ज्यादा ऊपर जाने लगे. लेकिन सेंट्रल बैंक्स की क्या पद्धति रही? अभी ये कॉन्फ्लिक्ट होने के पहले ही सितंबर अक्टूबर में फेड ने अपनी पॉलिसी चेंज करने का ठान लिया, और वो लगभग वो भी तय था कि आना ही है, क्योंकि 2 साल से उन्होंने इतना मॉनेटरी सपोर्ट दिया था कि वो तो जायज था कि कहीं ना कहीं तो वो उनको कम करना ही पड़ेगा. और ये जो मनी सप्लाई जो होता है, वो हमारी ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मनी सप्लाई जहां जहां जितना जितना ज्यादा बढ़ता है, वहां वहां उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता ही है. आप ज्यादा मनी सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो और ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा. फिर उसमें चाहे वॉर हो ना हो, ये ऐसे वो डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, लेकिन इसका असर इन्फ्लेशन पे कहीं ना कहीं आना ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिस्टम में इतना ज्यादा पैसा अगर प्रोवाइड कर दोगे तो सबके पास एक परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, खरीदने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है. तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़नी है और सप्लाई कभी भी उसका सामना नहीं कर पाएगी और इन्फ्लेशन आना ही आना है. लेकिन अगर इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही इनका डिसीजन ये था कि अभी मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, और आगे जाके निश्चित है कि ये साल में 2022 में फेड विल रेज रेट्स बाय मे बी 7-8 टाइम्स. કેટલું વડાવશે એ આપને ખબર નથી. That is the only unknown right now. 25 બેસિસ પોઈન્ટ્સની એક હાઇક થઈ છે, હવે આગળ જતા 50 બેસિસ પોઈન્ટ્સ થશે કે 25 જ રહેશે, આપને નહીં ખબર, એનું કોમ્બિનેશન થશે. પણ હવે જે એ લોકોની ઇન્ફ્લેશન હમણાં જે સિચ્યુએશન છે 7.5-8% સુધી તો ઓલરેડી પહોંચી ગયું છે, અને હજી શાયદ ઉપર જશે. મને લાગે છે 10-11 બી ટચ થાય એવું આપણે વી શુડ નોટ બી સરપ્રાઇઝડ, કે આપણે વધારે સરપ્રાઇઝ ન કરવું જોઈએ, કેમ કે આજે હમણાં ઇન્ફ્લેશન એ લોકોનો રેટ આવી છે એ તો કોન્ફ્લિક્ટના પહેલાની છે. કોન્ફ્લિક્ટના પછીનું જે ઇમ્પેક્ટ છે હજી તો આવવું બાકી છે. તો એ ઇન્ફ્લેશન એ લોકોને એવો એક આ લેવલ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ નોટ સમથિંગ ધેટ દે કેન
they can just ignore and do nothing about. So they will continue to do this. જે એ લોકોએ timetable એ લોકોનું આપ્યું છે at least for 2022, maybe even up to 2023 middle, I think they will continue to do till the time એ લોકોની policy નું normalization નહીં આવતું અને inflation control में नहीं आता. इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब मुझे लगता है कि उनका तो टारगेट 2%, 2-2.5% इन्फ्लेशन का है. आज वो चल रहा है 8% पे, तो 8 से लेके 2 तक आना, 2 तक लाना इज नॉट समथिंग विच इज इजी. नीचे से ऊपर लाना इन्फ्लेशन को एक बात होती है, इन्फ्लेशन को ऊपर से नीचे लाना एक दूसरी बात होती है. और दोनों के लिए वो पॉलिसी में आपकी गलती हो सकती है, बल्कि ऊपर से नीचे लाने में आपको और ज्यादा ताकत लगती है, इंस्टेड ऑफ bringing it, taking it from 0 to 2% or 0 to 3%. तो एरर भी हो सकते हैं और उनमें ये भी हो सकता है कि उनको जो ब्याज की दर बढ़ानी पड़े वो ज्यादा बढ़ानी पड़े बिफोर इट कम्स इनटू कंट्रोल. सो आई थिंक यूएस अमेरिका का तो पाथ क्लियरली सेट है. मुझे नहीं लगता है कि वॉर के कारण उनका ये जो उनका आउटलुक है या जो उनकी नीति है वो चेंज होगी. दैट इज अ गिवन. एंड लेकिन ये इससे ये भी साबित होता है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है. उनकी इकोनॉमी कोविड के पहले से भी स्ट्रांग थी, कोविड के दौरान भी करीब करीब अच्छी खासी स्ट्रांग रही, डिस्पाइट जो भी उनके वेव्स आए 1, 2, 3, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया वैक्सीनेशन, बट उनकी इकोनॉमी हमेशा से सॉलिड रही. और दूसरी बात उनकी इकोनॉमी की खासियत ये रही कि उनकी इकोनॉमी रिकवरी में भी एकदम यूनिफॉर्म तरीके से रिकवर हुई, मोर और लेस. अभी जैसे अगर मैं प्री कोविड की एक्टिविटी लेवल या इकोनॉमी लेवल को मैं अगर हम 100 मान के चलते हैं तो उनकी इकोनॉमी वापस 2 साल के बाद अभी आज जो स्थिति है वी कैन से दैट 100 तक वापस पहुंच भी गई है. लेकिन इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में वो सिनेरियो नहीं है. इंडिया में हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी हालांकि वी हैव डन वेल इन जनरल, लेकिन अपनी 2 ट्रैक की इकोनॉमी चल रही है आज. एक जो है वो विच इज मिड इनकम लेवल, अपर इनकम लेवल, वेरी हाई इनकम लेवल, अर्बन सेंटर, टियर 1, टियर 2 लोकेशन जो हम कहते हैं, सिटीज, मेट्रोज, उनमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोविड ना पिल्ला अगर 100 लेवल હતી तो वी आर बैक टू 100 में बी. बट टियर 3, टियर 4, लोअर सेक्शंस, रूरल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, they are not nowhere close to 100. Maybe they are at 85, 90. And that is also a significant part of our economy. तो अपनी एक बे ट्रैक पर चली रही है. And US is already a very, very strong. તો એ લોકોને વહાં આગળ ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવું હજી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ અને જ્યારે એ લોકોની વ્યાજનો દર અગર 1.25% છે या 1.5% છે અને ઇન્ફ્લેશન અગર 8% હોય તો ઇટ્સ અ બિગ imbalance જેને કહીએ, which cannot be allowed to continue for a long period of time, and it can become even more dangerous. So I think American interest rates yaasi વધશે ને Fed will be on the tightening process up until middle of 2023. ઇન્ડિયાના આપના હાલાત થોડા અલગ છે. We are in a decent place, as Ayub bhai also mentioned in the beginning ke and Ashish bhai also said ke India has managed its economy well on an aggregate basis. अपने एकली तकलीफ નથી આવી in general, except for some periods of COVID જ્યાં આપણે થોડું વધારે ટેન્શન હતું, especially in the Delta wave, in the second wave. But I think sitting now here અને આપણે જે હમણાં COVID ની situation that we are seeing across all the other parts of the world, and especially जो अब मिडिल ईस्ट अपने फार ईस्ट कंट्रीज में भी देख रहे हैं, जो वियतनाम में हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है. आई थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट हम बहुत ही सहमी हुई सिचुएशन में है, हम कह सकते हैं, संभली हुई सिचुएशन में है. लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रोथ को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी प्री कोविड लेवल तक पहुंची नहीं है.
और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमारी स्थिति प्री कोविड के पहले भी, प्री कोविड में भी कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हमने 2014 टू 19 एक कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ स्लोअर ग्रोथ देखा है, जहां हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी 6-7% से करीब करीब 3.5-4% की जीडीपी ग्रोथ पे आ गया था। तो इसलिए हमें और भी ज्यादा इस पे ध्यान देना है, इस पे काम करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट की फोकस यही रहेगी कि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। हमारा भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा कि हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगी नहीं। हम जो हमने लास्ट रीडिंग देखी इन्फ्लेशन की, वो 6 के ऊपर चली गई है। और थोड़ी आश्चर्य की बात ये भी है कि आरबीआई अभी भी इन्फ्लेशन को थोड़ा नरम होने की बात कर रहा है। 5.3 5.4 की उनकी उम्मीद आशा है, लेकिन वो होने से पहले मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन की दर शायद 7% के करीब करीब इंडिया में भी पहुंच सकती है। और वो इतनी ज्यादा इस कारण नहीं होगी क्योंकि ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर है या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वहां पे तो मुझे लगता है कि फिर भी हम शायद अपने आप को संभाल लेंगे, स्पेशली क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा ऐसे मूड में नहीं है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल की दामें बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए। हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद भी हमने कुछ मूवमेंट नहीं देखा वहां पे। और शायद अगर जो एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है जहाँ पे हमें वी हैव सम अपॉर्चुनिटी टू परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया और फ्रॉम अदर कंट्रीज एट अ डिस्काउंट, तो वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं वो साबित हो सकती है। लेकिन जहाँ से मुझे इन्फ्लेशन की थोड़ी ज्यादा उम्मीद है वो है बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस। और हमारी जो फूड की दर संख्या रही है वो अभी काफी कंट्रोल रही है कुछ सालों से, लेकिन जो अभी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं या जो सॉफ्ट कमोडिटीज जैसे मैंने कहा, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बाली हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, उन सबके दाम बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो एक तरीके से इन्फ्लेशन को यहाँ पे बढ़ोतरी दे सकते हैं। ऑयल में तो मुझे लगता है कि सप्लाई रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। कहीं ना कहीं किसी लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ेगी। शेल गैस जो है या शेल ऑयल जो है वो काफी सालों से यूएस में रुका हुआ था क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम था वो था। और वैसे भी इकोनॉमिकली शेल ऑयल $60-70 के नीचे इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहती है। तो एक लेवल ऑफ ऑयल के ऊपर जब दाम जाता है तभी शेल ऑयल में वापस इन्वेस्टमेंट आती है या वापस प्रोडक्शन शुरू की जाती है। और इससे मुझे लगता है कि ये जो लेवल ऑफ ऑयल है शायद 100 न भी रहे, लेकिन 80 और $100 के बीच में भी अगर ऑयल रहे तो मुझे लगता है कि शेल ऑयल वापस सिस्टम में आने लगेगा। और ओपेक और वो उन सब कंट्रीज से तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन स्लैक रहता ही है उनके पास। चीटिंग भी होती है ओपेक में, वो भी बंद हो सकती है। तो बहुत सारे जरिए हैं जहाँ से ऑयल की प्रोडक्शन आ सकती है, लेकिन सॉफ्ट कमोडिटीज में इतना आसान नहीं होता क्योंकि वेदर की डिसरप्शंस आती है, फ्लड्स, ड्राउट्स, वो सब अफेक्ट करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कमोडिटी की प्राइसेस जो सॉफ्ट कमोडिटी या फूड की जो प्राइसेस है या उनकी दरें है दैट विल इंक्रीज, और उसका असर इन्फ्लेशन, हमारे इन्फ्लेशन पे शायद थोड़ा कुछ पिछले कुछ सालों से नहीं आया है, लेकिन वो शायद हमें थोड़ा दिक्कत दे सकती है। लेकिन इससे एक और भी फायदा है, इससे ये फायदा है कि जब आ, ऐसे पदार्थों की दामें बढ़ती है तो फार्मर्स को फायदा होता है, रूरल इकोनॉमी को फायदा होता है, एग्रीकल्चर को फायदा होता है, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है, जो उनकी स्पेंडिंग की कैपेबिलिटी होती है, वो ज्यादातर ये प्राइसेस पे ज्यादा निर्भर होती है, नॉट एज मच ऑन प्रोडक्शन। और काफी सालों से हमने देखा है कि हमारा फूड इन्फ्लेशन ठीक ठाक रहा है, बैंड में रहा है, जो अर्बन कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि आपको हमको इतना ज्यादा हमको फूड इन्फ्लेशन से दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो उनके लिए नेगेटिव होता है।
तो जब वो दामें बढ़ेंगे तो शायद अर्बन इन्फ्लेशन के लिए या अर्बन कंज्यूमर के लिए, आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा दिक्कतदायी हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक अच्छा नतीजा भी आ सकता है उससे। और स्पेशली क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने वो फूड इकोनॉमी की, रूरल इकोनॉमी की थोड़ी टेंशन देखी है। कोविड के चलते हुए तो सेकेंड वेव के बाद हमने रूरल एरियाज की इकोनॉमी को थोड़ा ठंडा होते हुए देखा है, और जैसे मैंने कहा कि वो उनकी 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 पद अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं आई है, उससे बहुत कम। तो आई थिंक वो हमारी इकोनॉमी के लिए चैलेंज भी है, वो हमारी गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है कि वहाँ से कैसे ग्रोथ ज़्यादा आ सके, वहाँ से कैसे उनको स्टिमुलेट किया जाए। अगर वो नहीं होता तो ये फूड इन्फ्लेशन एक ज़रिया हो जाएगा उनकी, उन इनडायरेक्टली ज़रिया हो जाएगा उनकी उनकी इनकम्स और उनकी उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी या वहाँ से ग्रोथ आने की आने के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँगा कि हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन क्या वो हमारे जो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स है उनकी दर को ऊपर लेके जाएगी, मुझे नहीं लगता वो होगा। आरबीआई ये साल तो मुझे नहीं लगता है कि विल एक्ट, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2022, लेकिन उससे पहले मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, क्योंकि उनको ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा देना है इससे। कोविड के चलते हुए हमने ये भी देखा, कोविड से पहले हमारा थोड़ा अनुमान था कि बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में है, जो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही थी, वो शायद थोड़ी स्टेबलाइज़ हो जाएगी, और वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, टू स्टार्ट चेंजिंग द कोर्स ऑफ द इकोनॉमी। और ये वो सेक्टर ने या वो इंडस्ट्री ने बहुत सारा सफरिंग देखा था, और इससे क्रेडिट ग्रोथ जो सिस्टम में है वो कम हो गई थी, और ऐसा माहौल पैदा हो गया था जहाँ पे बोरोअर को भी बोरो नहीं करना था और लेंडर को लेंड नहीं करना, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। नाउ इट इज अ सिचुएशन કે હવે લેન્ડર ઓલ્સો વોન્ટ્સ ટુ લેન્ડ અને બોરોવર ને બી જરા થોડું એપેટાઇટ આવી છે ટુ બોરો, તો એક લેવલ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ ધેર, અને આ બેન્કિંગ સિસ્ટમના જે પાસ્ટ પ્રોબ્લેમ્સ છે that are behind us. More importantly, in the last 2 years, they have also raised a lot of capital. तो બધા banks ની ઘણી બધી banks ની, even public sector banks, not just large private sector banks, but even public sector banks have become very reasonably strong. અને capital ના point of view થી અમને એ લોકોને અગર 10 થી 12% 15% ગ્રો કરવું હોય તો વધારે કેપિટલની જરૂરત પડે એવું લાગતું નથી, ને કેપિટલ માર્કેટમાં ઇક્વિટી ડાયલ્યુશન કરીને પૈસા લેવાની, પૈસા ઉઠાવવાની જરૂર, ફંડ ઉઠાવવાની જરૂરત અમને નહીં લાગતી, એટલીસ્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ 2 years અમારે એ સિનેરિયો 2-3 વર્ષ એ સિનેરિયો નહીં જોવાતો. બલકે આપણે જોઈએ કે બજેટના અંદર બી આ વર્ષે government has not made any provision to recapitalize public sector banks. नहीं तो हर वर्षे कहीं ना कहीं public sector banks ना ले कई provision हुई है. So I think banking sector has managed itself very well in the last 2 years, and that gives us confidence कि वो एक important हिस्सा है इकोनॉमी का, जैसे मैंने कहा, और अगर उसकी हालत, उसकी तबीयत अगर ठीक रहती है तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारा उद्धार हो सकता है. हमें ये भी उम्मीद है कि इंडिया में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल यहाँ से शुरू हो सकती है, वापस रीस्टार्ट हो सकती है, जो काफी सालों से नहीं आई, और उसके लिए जो जिसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें लगता है कि वो सब एज ऑफ नाउ हमारे सामने मौजूद है, और उनमें सबसे प्रोमिनेंट क्या है? पहला तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट की जो बैलेंस शीट्स है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और आज पिछले 1 साल 1.5 साल में जो हमने कोविड के दौरान भी जो हमने इंडियन कंपनीज की बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ डेवलप होते हुए देखी है, वो हमने कभी पास्ट में बुल मार्केट में या स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साइकिल में भी नहीं देखी. कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास डेट सालों सालों तक रहा है, वो भी आजकल जीरो डेट या नेट कैश कंपनीज होने की तैयारी में, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है. दैट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट आल्सो फॉर इंडिया, बिकॉज जो काफी समय से एक कैपेक्स साइकिल या इन्वेस्टमेंट साइकिल जो नहीं आया है, दैट कैन स्टार्ट कमिंग बैक. तो
कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट की शुरुआत जो शुरुआती स्थिति है एज ऑफ नाउ, दैट इज वेरी 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 एडवांटेजेस. रियल एस्टेट साइकिल, दैट इज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल. ये भी एक पिछले 1-1.5 साल से जो हमने चेंज आते हुए देखा है, वो एक वेलकम साइन है. और उसकी भी जो जड़ें है, उसके भी जो फंडामेंटल्स है, या उसका जो शुरुआत है, वो 6-7 साल पहले वाला है या 10 साल पहले वाला. तो हमने बहुत सारा ओवर इन्वेस्टमेंट देखा रियल एस्टेट में, जिससे सालों सालों तक मेन मेट्रोज में, सिटीज में दामें नहीं बढ़े, फ्लैट रहे. लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर थी या एबिलिटी टू बाय हाउस था, वो बढ़ते गया. धीरे धीरे करके इनकम्स बढ़ती गई, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स जो थे, जिसके चलते हुए मॉर्गेज की जो रेट्स है वो कम होती जाती है, वो भी होता गया. तो एक तरीके से जो अफोर्डेबिलिटी जो कहते हैं रियल एस्टेट की, वो बढ़ती गई. दामें वैसे वहीं पे रहे, इनकम्स चलती गई ऊपर. फिर 2017 में एक नई चीज हुई जो रेरा के नाम से प्रसिद्ध है, एंड रेरा बिकेम अ important element of this whole sector because it led to consolidation. हमें पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपर्स है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, लेकिन रेरा के आते हुए पिछले 5 साल में ये धीरे धीरे से ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है, और अभी एक लेवल की स्पीड पकड़ चुका है. और लास्टली एक ऐसा पॉजिटिव आउटकम जो कोविड से हमें मिला है, कि कोविड के चलते हुए एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने लगी. तो वर्क फ्रॉम होम कहो, या चाहे ऑफिस की डिमांड कहो, या जो भी कहो, वो एक तरीके से वो जो पहले नहीं देखी गई थी, वो दिखने लग गई. तो एक पॉजिटिव जो कॉम्बिनेशन था, वो डेवलप हो गया, एंड नाउ वी आर सीइंग अ पॉजिटिव रियल स्ट्रॉन्ग, वेरी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट साइकिल. अब ये सब जो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमोडिटी प्राइसेस भी. कमोडिटी प्राइसेस, हालांकि जैसे मैंने आपको समझाया कि ऊपर है, लेकिन शायद थोड़े नीचे भी आ सकते हैं, और मेरी उम्मीद है कि 2022 में कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा करेक्ट हो जाएंगे. लेकिन फिर भी वो ऐसे लेवल पे है जहाँ पे हर एक की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है, और हर एक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है. तो आई थिंक ये सब जो एलिमेंट्स है, कि कमोडिटी प्राइसेस स्ट्रांग, रियल एस्टेट साइकिल, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रांग, इंटरेस्ट रेट्स एक तरीके से लो, बैंकिंग सेक्टर रीजनेबली स्ट्रांग, ये एक अच्छा मिक्स है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया की रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल है, सॉरी, वो यहाँ से एक नई दिशा में साइकिल वो चल सकती है. तो और उसका शायद लाभ हमें 3-4-5 साल कंटिन्यूअस मिलता रहे. सो ऑल द एलिमेंट्स आर इन प्लेस, जो हमने लास्ट 2004-2008 के बीच में देखा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गवर्नमेंट्स फोकस, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द गवर्नमेंट इज ओनली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी, और कैसा वो फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन देखने मिले. सो ये जो सब कुछ जो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू PLI स्कीम्स, बहुत सारे सेक्टर्स में PLI स्कीम्स अनाउंस हुई है, विद द आइडिया टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. मैन्युफैक्चरिंग in the last many years, India's manufacturing as a percentage of GDP has come down to the lowest possible. 15% पे आ गया. What used to be 19-20% is now down to 15%, and even 19 is low, and 15 तो क्या बताए. So the thing is that now focus has to be on manufacturing, क्योंकि manufacturing brings in a lot of benefits. Employment एक है, localization की एक benefit है, foreign exchange की savings है, and it leads to multiple indirect benefits. Factories लगती है, steel, cement की consumption बढ़ती है, all round growth आती है. So it has got lot of indirect multiplier effects. And manufacturing over services, इंडिया की रुझान थोड़ा सर्विसेज की तरफ ज्यादा रहा है पिछले 10-12-15 साल, आईटी को लेके, या इवन बैंकिंग को लेके. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू कम बैक इनटू फोकस. सो आई थिंक ये जो गवर्नमेंट की जो नीति है, आई थिंक दैट इज
also in the right direction. So I think we are net we are in a position that we can survive, or we can even take advantage of some of these जो ये conflicts जो आ रहे हैं या जो war का situation develop हो चुका है. I think ये हमारे लिए at some level or the other favorably रहा है, मतलब thankfully. चाहे वो हमारा you know political equation हो या diplomatic equation हो with some of these countries, उनमें भी हमारी एक standing बनी हुई है. उसका ये भी एडवांटेज है कि अगर रशिया के पास सब कुछ एक्सेस रहने वाला है, क्योंकि उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो एक तरीके से इंडिया के लिए वो बहुत सारी कमोडिटीज हमें इजीली या एक अच्छे दाम पे मिल सकती है. सो दैट इज समथिंग व्हिच आल्सो इज फेवरेबल फॉर इंडिया. And last but not the least, we are also standing on our own strength in terms of having managed COVID much better than many other countries which are even smaller than us, much smaller than us. So my sense is that we are in a good spot. I mean, और देखिए वॉर का तो हमने हमेशा से देखा है कि वॉर, आफ्टर वॉर देयर इज ऑलवेज दिस होल बिग थिंग अबाउट रिकंस्ट्रक्शन. आज का जो ये वॉर है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी समझ है, और ये सब चीज़ों में ऑब्वियसली किसी की भी समझ बियॉन्ड अ पॉइंट इतनी अच्छी नहीं है. हमने बहुत सालों के बाद वापस एक फिजिकल वॉर देखा है, लेकिन वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन हमेशा होता है. और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये वॉर इज नॉट गोइंग टू बियॉन्ड अ पॉइंट एक्सटेंड इन कॉन्फ्लिक्ट. जो अभी हो रहा है उसका वहीं तक सीमित रहेगा. इज my considered opinion. I can be very well wrong, but I don't think ये एक और उसका अगली या विनाशकारी रूप लेगा. तो I do not want to think about a situation where the conflict will become a lot more broad based and will lead to further implications. हाँ, लेकिन volatility इसके कारण in markets can clearly come about, और शायद हमने जो एक लेग ऑफ करेक्शन देखना था इंडियन मार्केट्स में या ग्लोबल मार्केट्स में, वो हम देख चुके हैं. वो आना ही था वैसे भी, बिकॉज मनी सप्लाई, जैसे मैंने बताया, वो तो कम होना ही था. और मनी सप्लाई का हम जितना भी कहे, लेकिन उसका सपोर्ट मार्केट्स की वैल्यूएशन पे रहा है ओवर द लास्ट 2 साल, और उसका धीरे धीरे से सपोर्ट या टेका वो हटने ही वाला था. थोड़ा जल्दी आ गया. जो 2023 में या अर्ली 23 में या लेट 22 में जो उम्मीद थी, वो लेट 21 में आ गया या अर्ली 22 में आ गया. बस इतना ही चेंज हुआ है. और उसका ट्रिगर शायद साथ साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया. नहीं तो मार्केट की करेक्शन इन अ वे थोड़ी ओवरड्यू थी, लेकिन उसका क्लीन अप का असर भी शायद मुझे लगता है फर्स्ट लेग ऑलरेडी हो चुका है. फर्स्ट लेग जरूरी था, और एक लेवल पे ये आने वाले दिनों में इट विल सपोर्ट द मार्केट्स आल्सो, क्योंकि एक फ्रेश एंट्री पॉइंट्स मार्केट्स में जरूर डेवलप होने लगी है अक्रॉस द मार्केट, नॉट जस्ट लार्ज कैप मिड बट अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट आल्सो. यहाँ से क्या, ये सवाल आपके सबके मन में जरूर होगा, यहाँ से मार्केट और ज्यादा करेक्ट हो सकता है कि नहीं. मुझे नहीं लगता कि द करेक्शन होगा, लेकिन और शायद मैग्नीट्यूड में 5-6% का करेक्शन और आ सकता है. और क्यों मैं 5-6% का कहता हूँ उसके बारे में मैं खुलासा करता हूँ, लेकिन 5-6% इसलिए क्यों आ सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के नए नए रूप शायद डेली बेसिस पे आ सकते हैं. एंड मोर देन कॉन्फ्लिक्ट, मुझे लगता है कि जैसे जैसे यूएस की टाइटनिंग पॉलिसी बढ़ती जाएगी, उसका असर शायद ज्यादा आएगा. और हमारा अगर लोकल इन्फ्लेशन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे मैंने समझाया, वो भी 7% के करीब जा सकता है. उसको चलते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी मार्केट में सॉफ्टनेस आ सकती है, लेकिन वो लेवल पे शायद मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा देर तक टिकेगा. तो इवन इफ यू सी अ 4-5% डाउन मूव, शायद 15,000 के करीब का निफ्टी की लेवल आ जाती है, तो मुझे लगता है कि वो लेवल पे ज्यादा देर मार्केट टिकेगा नहीं, क्योंकि सिंपली बिकॉज जब तक ओवरऑल फंडामेंटल सिनेरियो, जैसे मैंने समझाया, है स्टिल फेवरेबल. हमने बहुत सारे पिछले कुछ हफ्तों में एनालिसिस की हमारे एंड पे, सेक्टर बाय सेक्टर, ये देखने की कोशिश की कि
जो स्ट्रीट या जो मार्केट की आज उम्मीद है कि निफ्टी की अर्निंग्स 18-20% बढ़ेगी, ये साल बाद वाले साल में 15-16% बढ़ेगी, उस पे कितना रिस्क है एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड सो। और हमें एटलीस्ट निफ्टी की कंपनीज और ब्रॉड मार्केट ब्रॉडली की हमने जब स्टडी की तो हमें नहीं लगा कि बहुत ज्यादा रिस्क एलिमेंट है। तो अगर अर्निंग्स की बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनग्रेड नहीं आती है, और जिसकी मुझे शायद इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती भी नहीं है, तो अगर यहाँ से 15,000 की निफ्टी पे तो हम करीब करीब 15-16 मल्टीपल फॉरवर्ड मल्टीपल पे आ जाएंगे FY24 की बेसिस पे, और 16-17 और 16-17 के मल्टीपल पे आ जाएंगे, पी पे आ जाएंगे फॉर ऑन एन FY23 बेसिस। आई थिंक वो लेवल is something which is not a bad entry point. It cannot be called as excessive for a country like India, and especially with the improving metrics, whether it is in terms of banks, whether it is in terms of opening up of the economy. कुछ कुछ चीजें हमें करनी है, पॉलिसी मेजर्स ये वो सब है, लेकिन broadly I don't think we will derate below that multiple. So earnings की जब तक इंडिया में सपोर्ट रहेगी, and barring the COVID year, India has not had a negative year in earnings or a flat year in earnings. So I think that should hold up the markets on an aggregate basis. I think let me stop here. This is for my opening comments. मैं चाहूँगा कि we can maybe अगर कुछ question answers हो या कुछ सवाल हो तो शायद in the interest of time we can take some of those questions. And कुछ ऐसी अगर कुछ चीजें हैं जो मैं शायद I have not been able to talk about, या if anybody wants to know about, I will be happy to answer. Thank you very much once again for a patient listening, and thank you everyone for inviting me on this platform, especially as GCCI. Thank you again. Over to you, Ayub ji. થેન્ક યુ તાહિરભાઈ. નેક્સ્ટ ટાઈમ હોપ કે તમે સુરત આવો ને આપણે એટલે મતલબ સેમિનાર કરીએ. Inshallah. યસ, થેન્ક યુ. હવે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લઈ લઈએ. હું કુનાલને રિક્વેસ્ટ કરીશ વન બાય વન પાર્ટિસિપન્ટના જે ક્વેશ્ચન હોય તે લઈએ. બટ ફર્સ્ટ આઈ આસ્ક યુ વન ક્વેશ્ચન. સર, આ વોરની ઇમ્પેક્ટ જે છે તે ક્રૂડ ઓઇલ પર આવી ને જે ક્રૂડ ઓઇલ ડે બાય ડે હાઈ મતલબ ક્રોસ કરતો ગયો, તો એમાં ઇન્ડિયાનો જે સ્ટોક છે ઓઇલ એક્સપ્લોરેશનનો જે સેક્ટર છે આખો, તો એમાં આપણને મતલબ પોઝિટિવ સાઇન જોવા મળી. તો લાસ્ટ 5-8 yearsથી જે સ્ટોક ઓઇલ એક્સપ્લોરેશનના ONGC છે કે બીજા બધી કંપનીઓ છે એમાં હાઈ મતલબ 52 વીક હાઈ જોવા મળ્યા. તો એ સેક્ટરમાં હવે આગળ તમને મતલબ ઇન ફ્યુચર ઓઇલ એક્સપ્લોરેશનના સેક્ટરમાં શું લાગે છે? તો ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન જે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયાની જે કંપનીઝ છે એ there are some companies which will benefit, very few companies જે and they are not, એ લોકો જે directly oil production માં નથી involved except ONGC જે છે અને Oil India, but there are ancillary companies જે આપણે કહીએ ને કે જે they are supplying equipment, yeah, they are supplying pipelines or steel tubes manufacturers for pipelines. They have not benefited in many years क्योंकि जब मैं कह दूं कि नवो exploration થયું નથી, તો હવે that will start અને supply of all this equipment and ancillaries will begin. ONGC will not benefit મારા હિસાબે ઓઇલ से हमने એના અંદર વધારે એક્સાઇટમેન્ટ નહીં લાગતી જેટલી અમારે ગેસના વિષયમાં લાગે છે. અને ગેસની જે સિચ્યુએશન છે એ રશિયા યુક્રેનનું કોન્ફ્લિક્ટ શરૂ થવા પહેલા બી ગેસની સિચ્યુએશન ટાઈટ હતી અને કોન્ફ્લિક્ટના પછી તો વધારે થઈ ગયું છે. સો આઈ થિંક કોન્ફ્લિક્ટ અગર કાલે રિઝોલ્વ બી થઈ જાય છે, I think gas prices will stay quite elevated, yeah, quite high. Correct થશે પણ they will still be higher. રાઈટ. ને
ગેસનું બેનિફિટ જે છે ઓએનજીસી ને ડેફિનેટલી મળશે, પણ અધરવાઇઝ એન્સિલરી કંપનીઝ જે which are enablers to that oil exploration process are the ones which are going to benefit more. થોડું ઘણું BPCL ને because of they having oil wells in oil properties in Mozambique અને સાઉથ આફ્રિકા અને બીજી જે બધી છે એ લોકોની એમાં થોડું બેનિફિટ આવી શકે છે, but I think bigger benefit will be to natural gas, and natural gas ના રૂટ સી ઓએનજીસી ને બેનિફિટ થઈ શકે. ઓકે સર, અનધર ઓપોઝિટ સાઇડ ક્વેશ્ચન છે, જે રૂમર્સ થોડા દિવસથી ચાલી રહી છે, તમે કવર તો કર્યું છે તમારી સ્પીચની અંદર, બટ ઓઇલ એટલે પેટ્રોલ ડીઝલના ઉપર 25 થી 20 રૂપિયાનો વધારો આવી શકે. તમે કહ્યું કે ગવર્મેન્ટ મેન્ટેન કરી રહી છે, વધારો નથી કરી રહી, બટ ઇફ કે મોટો જો હાઇક આવશે તો એની ઇન્ફ્લેશન પર મોટી અસર દેખાશે ને એના પર માર્કેટને કઈ ઇમ્પેક્ટ, મતલબ માર્કેટ પર મોટી ઇમ્પેક્ટ આવી શકે? બીકોઝ એની સાથે સાથે પેરેલલ ક્વેશ્ચન લઈ લઉં છું કે એફઆઈઆઈ કન્ટિન્યુઅસ સેલિંગ કરતી હતી. આઈ થિંક લાસ્ટ વીકથી થોડુંક એણે પરચેસ એફઆઈઆઈ ચાલુ કર્યું છે. મે બી અરાઉન્ડ 2 લાખ કરોડ ઉપરનું સેલિંગ થઈ ચૂક્યું છે માર્કેટમાં એફઆઈઆઈ નું. બરાબર છે. બીકોઝ મે બી કદાચ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ને ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર કન્ટિન્યુઅસ બાઇંગ કરતા ગયા તો એના કારણે માર્કેટને થોડુંક મતલબ રિલેક્સેશન મળ્યું છે. બટ જો આવી કે સિચ્યુએશન આવે તો એનું ઇમ્પેક્ટ શું દેખાય છે માર્કેટ પર? તો સૌથી પહેલા તો ઓઇલ ને પેટ્રોલ ડીઝલનું ભાવનું મેં વાત કરી કે મને નહીં લાગતું કે ગવર્મેન્ટ આમ એવા મૂડમાં છે જ્યાં બહુ મોટી પ્રાઇસ હાઇક લેવાની એમને ગરજ લાગે છે યા જરૂરત પડશે. કેમ કે આપનું ઇન્ડિયામાં શું છે કે $50 ઓઇલ હોય છે ત્યારે બી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધે છે અને $100 બી વધે છે. તો આપને એમ નથી કે ફાયદો મળ્યો છે નીચેના ભાવમાં ઓઇલમાં. પણ ગવર્મેન્ટની નીતિ આ વાતના અંદર એમ રહી છે કે આપણે ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ટ એઝ અ entity which will smoothen the impact. Instead of you and me going every day to the pump and finding a new price અને પછી આપણે આપણું reaction એના ઉપર કરવું, I think the government is trying to do that on our behalf. I will give you some थोड़ा इंक्रीज करेंगे, कुछ इंक्रीज मैं हर बार दूंगा, लेकिन जब बहुत बढ़ाने का समय आएगा मैं इतना ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा आपके लिए. तो अभी मुझे लगता है कि $100 ऑयल में इतना ज्यादा तेल का पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा जितना अपना $50 या $60 में बढ़ सकता है. तो क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के पास जो कुशन है वो हमें वापस लौटा दी जाएगी और उससे हमारा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. जो एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जब ऑयल प्राइसेस $50, $60, $70 होते हैं, वो ऐसे माहौल में हमारे लिए काम आ सकते हैं, एंड गवर्नमेंट विल बी विलिंग टू गिव अस बैक सो दैट द रिटेल प्राइसेस आर मेड स्मूदर. और इंडिया की सेंसिटिविटी पेट्रोल डीजल से ज्यादा होती है, ग्रोथ की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, हर एक इकोनॉमी की होती है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि जो नीचे वाले दर है उनके लिए अगर ₹5 बढ़ा दो तो उनकी इनकम में बहुत ज्यादा असर पड़ता है. लेकिन अमेरिका के नीचे वाले जो इनकम पिरामिड है उनमें भी अगर $5 ज्यादा देना पड़े तो उनकी इतनी ज्यादा इनकम कम नहीं हो जाती या सेविंग्स कम नहीं हो जाती जितना हमारे वहाँ आती है, क्योंकि हमारे लो इनकम हाउस होल्ड बहुत ही ज्यादा लो इनकम पे होते हैं. तो ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए. तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दर बढ़ेगी, और शायद गवर्नमेंट अपने पहले पूरे बाकी सब जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर कर लेगी. चाहे वो $25 कम में ऑयल कहीं मिलता है तो वो कर लो, किसी और तरीके से अपने एविएशन फ्यूल या इंडस्ट्रियल फ्यूल का जो बढ़ाना है वो बढ़ा दो, जैसे कल परसों महाराष्ट्र में किया गया. तो आई थिंक वो सब चीजें पहले एक्सप्लोर की जाएगी, और उससे बाद भी अगर सिचुएशन नहीं संभली तो आई थिंक दे माइट इंक्रीज. तो ये बात मेरे हिसाब से, और जैसे मैंने कहा अभी माहौल ऐसा है कि गवर्नमेंट को ग्रोथ की ज्यादा तलब है, न कि ये सोचना है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इन्फ्लेशन ऑयल के फॉर्म या पेट्रोल डीजल के भाव के थ्रू नहीं आएगा मेरे हिसाब से.
अगर आता है तो फूड प्राइस के चलते हुए आ सकता है, लेकिन वो भी हमें लेके जाएगा 7 या 7 के करीब, थोड़ा थोड़ा 7 सवा 7 के करीब। उससे ज्यादा अगर प्रॉब्लम रही तो फिर हमें शायद कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरी उम्मीद है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है ऑयल के साथ साथ बाकी सब भी आने वाले 3-4 महीने में तो नहीं, बिकॉज ये जब तक माहौल बना रहेगा तब तक थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सेटल हो जाता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस कम होते जाएंगे थैंक और यू। तब गवर्नमेंट पे प्रेशर और भी कम होता जाएगा। Okay. आपने कहा FIIs की सेलिंग के बारे में भी आपने जो मुद्दा उठाया है, तो आप देखिए FII की सेलिंग इंडिया में इंडिया मार्केट्स में उनकी सेलिंग 2 या 3 कारण से आती है। एक तो जब उनको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो विश्व में हर बाजू हर जगह पर बढ़ने वाला है। इंडिया की मार्केट या ग्रोथ इकोनॉमी मानी जाती है, और उसपे और जब भी ग्रोथ इकोनॉमी को अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाती है। और जब एक ग्रोथ इकोनॉमी के लिए अगर इंटरेस्ट रेट्स की दर कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब भी उनको ये समझ आता है या उनको माहौल में दिखता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए, न कि बहुत सालों के लिए, लेकिन आने वाले 6-12 महीने के लिए भी अगर ऐसा माहौल बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स की दरें ऊपर जाने वाली, तो उनका ये अंदाजा रहता है कि ग्रोथ मार्केट्स को पनिशमेंट होगी और ग्रोथ मार्केट की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। ग्रोथ मार्केट की वैल्यूएशन इंटरेस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मार्केट वैल्यूएशन नीचे आती है, और इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो मार्केट की वैल्यूएशन ऊपर जाती है। तो एक वो कारण है जिसके चलते हुए हमने ये पिछले 6 महीने में FIIs की सेलिंग देखी है, क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इस बात का डर था कि सितंबर अक्टूबर में जब फेड ने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने का ठान लिया, तब से उनकी सेलिंग शुरू हो गई। फिर दूसरी बात जो उनको परेशान हमेशा करती है कि कमोडिटी की जो दरें होती है, कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल और ऑल अदर्स ऑल्सो। एंड जैसे ही ये पता चलने लगा कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए कि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे भी बढ़ गए थे और ज्यादा और बढ़ने वाले हैं, और ये शायद माहौल बना रहे कुछ समय के लिए, तो वो एक सेकंड कारण हो जाता है कि नेगेटिव इंडिया हो जाता है। और तीसरी चीज ये होती है जब वैल्यूएशन एक लेवल से थोड़ा आगे बढ़ जाती है, तो वो एक उनके लिए एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि उनके लिए तो बहुत सारी मार्केट्स है इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत सारी सेगमेंट्स है, तो दे कैन ऑलवेज रिमूव मनी फ्रॉम वन कंट्री एंड गो टू अनदर। सो आई थिंक ये 3 में से एज ऑफ नाउ मुझे ये उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आने वाले, स्पेशली अमेरिका में, तो बढ़ते जाएंगे, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट्स के पर्सपेक्टिव से इंडिया को हमेशा नेगेटिवली थोड़ा देखेंगे कुछ समय तक। हाँ, ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे आ जाते हैं तो उनका रवैया थोड़ा बदल सकता है, दैट आई थिंक इज पॉसिबल। और तीसरी चीज जैसे मैंने बताया वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन एक लेवल पे करेक्ट हो गई है, कुछ हद तक करेक्ट हुई है। जैसे मैंने कहा, अगर और थोड़ा 5% 7% जैसी गिरावट आ जाती है तो और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनके लिए एंट्री बन जाएगी, तो तब जाके फ्लोज का रिवर्सल भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि 15,000 निफ्टी में या देयर अबाउट्स मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ऐसी लेवल पे आ जाएगी जहां पे बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स नेगेटिव नहीं रह पाएंगे, और तब तक शायद कुछ और जो चीजें नेगेटिव है इंडिया के लिए, कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि हुई, वो भी शायद हमारे लिए थोड़ी सिनेरियो सिचुएशन बेटर हो जाए। Sir, so first question is from Mr. Dennis Shah. He wants to know highlight on disinvestment. देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट अभी लास्ट ईयर तो जो हमें सबको पता है, वो जो टारगेट सेट किए थे या जो भी हमने ठाना था वो नहीं हो पाया है, बट आई थिंक दिस टाइम अराउंड अभी एक्सपेक्टेशंस कम है, और जो हमने बजट में भी
प्रपोज किया है या जिसका बजटिंग किया है या अंदाजा लगाया है, दैट इज मोर बेस्ड ऑन द LIC IPO। और पिछले 2 हफ्ते पहले ही एक दीपम जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट फॉर द पब्लिक सेक्टर, उनकी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका एक हिस्सा मैं भी था। मैं भी वो डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस में था, और जहाँ तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनसे, जो मुझे की टेक अवे मिला, मुझे लगा कि इस बार इतना चैलेंज नहीं होगा टू मीट द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, क्योंकि टारगेट एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा हाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि LIC IPO पे ज्यादा निर्भर है, और मुझे लगता है कि LIC IPO होने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये लेवल ऑफ मार्केट्स ऑल्सो 17,000 के करीब का मार्केट भी विल बी अ गुड एनवायरनमेंट फॉर LIC IPO टू बी कंडक्टेड। शायद 2-3 महीना और लग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा देर लगाने की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि वो IPO है, वो इट्स नॉट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट पे आपका चैलेंज रहता है कि आपको क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली क्लियरेंसेस से ज्यादा तो ये कि आपके पास बायर होने चाहिए, और आप जो बेचना चाहते हो उनकी एक एपिटाइट हो, એના લીધે એક બિડિંગ થાય, એક સારું લેવલનું બિડિંગ હોવું જોઈએ, એ જરૂરી છે। પણ હવે આપણે BPCL માં જોયું કે that did not happen because of all the reasons, many different reasons. But IPO is not about that. IPO is much easier to conduct. You have to only develop some appetite, અને એક વેલ્યુએશન પર આપણે બરાબર सी अगर IPO લાવે તો investors are also happy, અને it will help the government also, કેમ કે IPO માં તો they will sell maybe 10%, 5%, whatever, but જે balance 90% એ લોકોના પાસે રહેશે, એની valuation will keep going up if they give investors a good entry price. So I think this year જે budgeted છે on the disinvestment plus IPO will be maybe easier to meet than it was in the last 2 years. But over time, government has decided, they are very firm. I could understand, and it is very clear. They have, Prime Minister and everybody else has said it on various occasions, that they want to be out of business as much as possible. So disinvestment is a reality. And there are some areas where they need to work. They have to be a lot more alert in the market, क्योंकि market no complexion change થાતું જાય છે on a daily basis. So they cannot take a very fixed view about things. They have to be flexible, અને થોડું જેમ આપણે કહીએ ને nimble footedness હોવું જોઈએ, કે જેમ જેમ માર્કેટમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે એમ એમ, હવે ફોર અમદાવાદ વચમાં આપણે જોયું IRCTC નો ભાવ 1,000 રૂપિયાનો ઉપર, માર્કેટ કેપ 1 લાખ કરોડનો ઉપર, હવે પછી એના પછી એટલું મોટું કરેક્શન આવ્યું। પણ at that level government of India could have easily sold 10%, 67-68% stake છે, 58 કરી નાખ્યું હોતે या 55 કરી નાખ્યું હોતે, તો 10% ના તમારે 10-11 હજાર કરોડ આમ જ very easily આવી જતે, ને તે ટાઈમ ઘણું એપેટાઇટ હતી સ્ટોક। But it should be fast to act on that on such opportunities. So એ થોડું એ લોકોને શાર્પન કરવું જરૂરી છે, but otherwise I think intent is very clear. Sir, next question is from Mr. Kausal Shah. He wants to know, for next 3-4 years horizon, should go for mid, small or large cap portfolio? Yeah, so Kaushal bhai, I will say કે હમણાં જે scenario છે, maybe looking at the events which are around us, some people, many of us feel that it might be better to be in large caps, અને mid cap અને small cap જ્યાં થોડું વધારે risk આમ જોવા મળે છે એને થોડું avoid કરવું જોઈએ। બરાબર છે એ વાત, that is a logical way of thinking. પણ
મારા હિસાબે I think right now the signals are not fully clear, અને especially after this correction જે આપણે જોયું અને broad markets માં જે correction જોયું, તો એના mid caps and small caps also in some pockets have become attractive. Generally mid and small caps do well in a time when when the domestic economic cycle is doing well, અને યા તો is expected to do well. અને જેમ મેં સમજાવ્યું કે મને લાગે છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમિક સાયકલ over the next 3-4 years is going to be better than what it was in the last 5-7 years. So I think mid cap and small cap is not a place to be completely out of. Tactically થોડું આ જે હમણાં માહોલ છે એના લીધે maybe one wants to increase allocation to large caps, it is fine, but it is also not a situation where you have to take extreme measures and go entirely into large caps. મને લાગે છે at this stage અમને અલગ અલગ ચીજ અમે ટ્રેક કરીએ છીએ, ઇકોનોમિક ઇન્ડિકેટર્સ જે છે એ છે, વેલ્યુએશનની જે રેન્જ છે, લિક્વિડિટીની જે રેન્જ છે માર્કેટના અંદર, એ બધા all these factors influence performance and valuations of large cap, mid cap and small cap. ને હમણાં જે અમારા સામે છે, it is not giving any strong signal one way or the other. જે આપણે for example 2018 ના અંદર towards the end of 2018 એક clear signal હતું કે mid and small caps were much more attractive than large caps, અને significant discount હતું, liquidity ના problems હતા, economic cycle was going to turn negative, ને એમ બધા confrontations હતા. તો that was a good time for one to buy mid and small caps and over large caps. But that time, right now we don't have that clear indication. So મારું માનવું છે કે it should be a bit of a mix, maybe a little more in large caps compared to mid and small caps, but not 80% 90% large cap also. Second चीज हमने एम भी છે કે in some sectors mid and small caps are more attractive, but in some other sectors, other business or industries, large caps are more attractive. હવે for example हमने ટેકનોલોજી જોવું તો આઈટી સેક્ટરના અંદર અમારે લાગે છે કે મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સના અંદર હજી વધારે ગ્રોથ હોય છે કમ્પેર્ડ ટુ લાર્જ કેપ્સ. અગર મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સના અંદર લાર્જ કેપ્સના અંદર 10 થી 15% ની ગ્રોથની એક્સપેક્ટેશન રાખીએ તો મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપમાં 20 થી 25% ની બી રાખી શકીએ. બેન્કિંગમાં મેં જોઉં છું તો મને લાગે છે કે લાર્જ કેપ્સ આર મચ બેટર દેન મિડ કેપ એન્ડ સ્મોલ કેપ બેંક્સ. તો કન્ઝ્યુમર સેક્ટરમાં જોઉં છું તો એફએમસીજીમાં જોઈએ છે તો લાર્જ કેપ્સ વધારે પ્રેફર્ડ છે. હજી કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરીમાં જોઈએ છે તો કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સમાં જોઈએ છે તો અમારે લાગે છે કે મિડ કેપ્સ કેન ડુ બેટર. સિમેન્ટમાં મિક્સ છે, લાર્જ કેપ બી ગમે છે ને એક બે સ્મોલ કેપ મિડ કેપ બી છે જે અટ્રેક્ટિવ લાગે છે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ, સેક્ટર બાય સેક્ટર ચોઇસીસ આર ડિફરન્ટ. જ્યારે અમે પોર્ટફોલિયો લેવલ પર જોઈએ છે તો વી ફાઇન્ડ કે a good mix blend या multi cap या flexi cap kind of strategy is a better strategy at this stage. Extreme पर एक નથી કઈ બી રીતે, neither in valuations nor in terms of outlook, to say that no, large caps are the most attractive, or even to say કે mid and small caps 80-90% હોવું જોઈએ, એ બી નથી, એવો માહોલ બી નથી. આને આવતા 10-12 મહિના 18 મહિના આપણે એમ બી સોચીને ચાલવું જોઈએ કે આપણું રિટર્ન એક્સપેક્ટેશન થોડું manageable રાખવાનું છે. We can't expect 25%, 30%, 40% that we saw in the last 2 years. But can we get somewhere between 10 and 15%, or even 10 to 20%, depending upon strategy to strategy? I think it's possible, even with whatever more this, that, everything put together. Market માં એકલી opportunities તો છે. Sir, next question is, what would be your view on gold prices? Is it the right time to invest in gold? So I don't have a firm view on gold, actually, to be honest with you, but normally gold is considered to be a good hedge against inflation, against uncertainty. અને especially આ જરા થોડું જે હવે જેનું મેં ફોર એક્ઝામ્પલ મેં વાત કરી કે વોરનું જે ઇમિડિયેટ ઇમ્પેક્ટ છે જે તો મોરલેસ આપણે સામે છે, આપણે જે બી જોઈ રહ્યા છે છે જ, પણ જે એના હિડન ઇમ્પેક્ટ્સ છે એ આપણે અમને જે દેખાઈ નથી રહ્યા, that will
you know, maybe become visible over the years in terms of relations between different countries, in terms of investments in commodities, and so on and so forth. તો એના અંદર એક આ બી છે કે ગોલ્ડનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધતું જશે as a reserve currency or as a backup currency. So from that perspective, gold can do well in my view. અને especially જે થોડું confusing environment છે, જે rising interest rates નું environment છે, હમણાં આપણા સામે જે છે for the next 12 થી 18 મહિનાનું, તો એમ આપણે સૂચીને ચાલીએ તો it is a good environment for gold to do well. કેમકે gold typically does well in a rising rate environment. અને in an environment where there is uncertainty या जहाँ fear નો માહોલ હોય છે, તો I think gold should have some allocation in the portfolio. Somewhere between 10 and 15% gold is not a bad investment level at this stage. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर संजय जी कि कौन सा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है और एक स्मॉल साइज इन्वेस्टर है जिनको इनसे दूर रहना चाहिए. नहीं तो सेकंड क्वेश्चन का मैं क्लियरली आपको कह सकता हूँ कि देखिए स्मॉल इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क मैनेज करना है. ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ऐसा है जिससे बाहर रहना. More important at this stage is not whether one should be in the market या बाहर रहना है. It is about how risk control कैसे करना है, क्योंकि opportunity भी ऐसे ही समय में आती है. So we have to take advantage of that opportunity, but we have to control risk. So मैं ये recommend नहीं करूँगा या मैंने ऐसा नहीं कहूँगा कि छोटे निवेशक के लिए बुरा मार्केट है, या इनफैक्ट छोटे निवेशक को यही ऐसे ही मार्केट के माहौल में शुरुआत करनी चाहिए. स्पेशली अगर इक्विटी की एक्सपोजर कम है तो ऐसे ही दौरान इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि इसका जो एडवांटेज, और स्पेशली अगर एक छोटा निवेशक है जिसके पास 3, 5, 7, 10 साल का होराइजन है, तो डेफिनेटली यू शुड एनकरेज हिम टू स्टार्ट और इंक्रीज हिज एलोकेशन. कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है? वेल, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो एज ऑफ नाउ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे सेक्टर्स में अलग अलग किस्म से है. अगर जो हम सोचते हैं और जो अगर ठीक से नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर पे सबसे उसका भारी असर पड़ेगा. और अगर स्टोरी कंप्लीटली हमारी दूसरी दिशा में चली जाती है तो डेफिनेटली दैट इज अ सेक्टर विच विल बी द मोस्ट हर्ट. लेकिन वो ऑलरेडी पिट चुका है या ऑलरेडी वो अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उससे और ज्यादा बुरा हो सकता है. शायद मैं कहूँगा कि बल्कि बहुत ज्यादा चढ़ के कमोडिटी सेक्टर के पीछे इस लेवल पे भागना एक थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है. मैं नहीं कहूँगा कि वो बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ये लेवल पे कमोडिटी प्राइसेस जब ऐसे हद तक पहुंच जाते हैं या बहुत ज्यादा चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने समझाया सप्लाई की रिस्पॉन्स आती है या डिमांड की डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो मीन रिवर्जन वो सेक्टर्स में होता ही. तो मैं इस लेवल पे आप आज के माहौल में मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि इस कमोडिटी से थोड़ा संभल के रहना चाहिए. Sir, next question is from Mr. Aditya Shah. What will be impact of we buying oil from Russia, especially sanction from USA? देखिए ये थोड़ा डिप्लोमेटिक वाला मामला है, ऑलवेज कहना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब तक जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हमने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह से देखा है, अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है वर्सेस अगेंस्ट इंडिया, और उसके भी अंडरलाइन कारण हो सकते हैं. हमारा जो उन पर भी हमारा जो डिपेंडेंस है, उनका हमारे ऊपर जो डिपेंडेंस है, तो और जो हमने स्टैंड लिया है, जो हमारी पॉलिसी या नीति है विथ रिगार्ड टू रशिया एक्सेट्रा, वो उनको पता है. टेक्निकली ऑल्सो अगर आप
रशियन कंपनी से डायरेक्टली डील करते हो तो आपको वो सैंक्शंस आपके आड़े आ सकते हैं या यू विल हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट से लेते हो या बीच वाले किसी एजेंसी से लेते हो या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो वो सैंक्शंस के स्कोप में नहीं आते बहुत बार। तो आप अगर उनसे उनके पास से ऑयल की डीलिंग करते हो या उनसे एक कार्गो ले लेते हो $20-25 कम में, तो शायद वो टेक्निकली वो सैंक्शंस में क्वालिफाई नहीं हो। सो दैट वो इंडिया एक तरीके से उसका अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकता है in order to make sure that America does not have objection for India buying crude oil from some intermediaries, and which is actually Russian oil at the end of the day. કેતનભાઈ, નિખિલભાઈ, તમારા કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો? કેતનભાઈ છે? કેતનભાઈ, નિખિલભાઈ, તમારા કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો? નિખિલભાઈ. નો એબ્સોલ્યુટલી આટલું બધું જ્ઞાન સરસ મળી ગયું. હવે બીજું શું? ઓકે, તાહિરભાઈ, થેન્ક યુ. ઘણું સરસ તમે મતલબ એક્સપ્લેન કર્યું માર્કેટ કેમ રહેશે, કેમ નહીં રહેશે, આગળ શું લાગે છે ફ્યુચરમાં, એ બધું મતલબ વેલ, એકદમ થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન. My pleasure. હું ચેમ્બર વતી ને અમારા કમિટી વતી તો થેન્ક્સ કહું છું, પણ વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહેવા માટે અમારા ગ્રુપ ચેરમેન નિખિલભાઈ મદ્રાસીને રિક્વેસ્ટ કરું છું. નિખિલભાઈ. वेरी मच अयूब भाई, ताहिर भाई बादशाह, आप सच में बादशाह साबित हुए हो, क्योंकि जिस परिस्थिति में से हम लोग गुजर रहे उस परिस्थिति में इतना अच्छा नॉलेज शेयर करना ये बड़ी अपने आप में बड़ी घटना है, बड़ी बात है. सो थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई. आप इसी तरह से चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े रहिए. आपका मार्गदर्शन हमारे लिए शायद पथदर्शक भविष्य में बन सकता है. सो थैंक यू प्रभात जी, थैंक यू कुणाल जी, અને खूब खूब आभार अयूब भाई, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया. इसी तरह से प्रोग्राम में आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं. धन्यवाद आप सबका, और जितने भी श्रोता बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े उन सबका शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you once Thank again you. SGCCI Surat for inviting me. I will be happy to be part of this in future as well. Everybody on the panel, once again thank you. आपने इतना सराहा और मुझे एक मौका दिया यहाँ पे अपनी बात कहने का. So thank you, and I hope ये आपको काम आए और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में और वेल्थ क्रिएशन में आपके लिए यूजफुल साबित करे. थैंक यू. कल सुबह पोजीशन बनाने में बड़ी सरलता रहेगी. थैंक यू ताहिर भाई, आपने हमारे रिक्वेस्ट को ये करके एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन रहा है. थैंक यू वेरी मच अगेन. ओके, थैंक यू. बाय. थैंक यू निखिल.